Good evening to all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay. So yesterday I have completed the resume and I have also completed, I think, the letter, sorry, the structure of cover letter. I think I have completed. Any doubt? No, sir. Okay, very good. हम्म, ठीक है. आप लोगों को जो नोट्स दिया जा रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा देख रहे हो ना. Yes, sir. चलो, सब तो ये सर सुन रहे हैं, कोई बात नहीं. उसको अच्छे से पढ़िएगा. एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट्स in any, then please tell me. Okay. Now, today we're going to start a new chapter, that is writing a business memos. What is the meaning of memos? Memos means memorandum. Okay. Business memorandum. Okay. So today we're going to discuss this business memorandum, which is in your syllabus. Okay. So what is memorandum is all about? What is memorandum is all about? Business memo or memorandum simply means it describing the problems, inform employees, request information, explain actions and policies, provide directions and giving feedback. ये जितने भी लिस्ट है, जितने भी मैंने आप लोगों को बताया, that business memos simply describing the problems, information about the employees, request, explain actions, policies. This all comes under memorandum, business memorandum. These are called memorandums. Okay. And business memorandum is a formal written message. क्या है ये? एक formal written message है, written in a conventional form for someone within the organization to meet a specific needs. Okay. तो business memorandum क्या है? एक simple written message है और कुछ नहीं, एक सिंपल रिटन मैसेज है जो सिर्फ कंपनी के अंदर ही में वो जो प्रोसेस है या मैसेज है वो चलता है. ठीक है. इट्स ऑल बिन सर्कुलेटेड इनसाइड द बिजनेस, मतलब इनसाइड द कंपनीज ओनली और वेयर और एनी इंडस्ट्री ओनली. वो बाहर कभी वो फिर कोई मैसेज वैसा नहीं आता है, वो कंपनीज के अंदर में चलता है. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपका जो रेस्पेक्टिव मैनेजर है कंपनी के, उसने एक डिक्लेरेशन दिया कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स देयर विल बी अ 3 shift duties from 9 a.m. to 5 p.m., from 5 p.m. to 1 p.m. and 1 p.m. to 1 a.m. to नेक्स्ट मॉर्निंग. तो इस तरह का जो भी मैसेज होता है, या फिर ऐसा होता है कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स योर पंच टाइम विल बी at 9:25 AM sharp. तो इस तरह का जो मैसेज जो कंपनीज के अंदर में सर्कुलेटेड होते हैं फॉर एम्प्लॉइज, फॉर वर्कर्स एंड ऑल, इट्स कॉल्ड बिजनेस मेमोरेंडम या फिर बिजनेस मैसेज. Am I clear? Is it clear to you? Now, Yes. as okay, as business memos solve problem and act as a mean of decision making, they serve many purposes. Okay, इसीलिए इसे कहा जाता है मेमोरेंडम या फिर बिजनेस मेमोस. इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्विक प्रॉम्प्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम मेथड्स होता है. ओके, क्विक सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होता है और डिसीजन मेकिंग मेथड्स होता है. दैट इज व्हाई इट इज इंप्लीमेंटेड इन एवरी कंपनीज. दिस इंस्टेंट मैसेजेस जो है वो एवरी कंपनीज में, आप आदित्यपुरी एरियाज के कोई भी इंडस्ट्री सेक्टर में चले जाइए. If you go to Ramakrishna Forging Limited, Jamshedpur Metals Treatment, Tata Steel Plant, Tata Motors, you will going to see, क्योंकि हम लोग का कॉलेज से तो इंडस्ट्रियल विजिट हम लोग करते ही है, तो एज वी गो देयर्स ना, तो एक बाहर में बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड जैसे टंगा हुआ रहता है. जस्ट लाइक इन स्कूल डेज और इन अ कॉलेज वी हैव अ नोटिस बोर्ड stick in the wall. The same thing, then there is a notice board in the office areas of any company, okay, where lot of instant messages, lot of quick and prompt messages are there which you need to follow. Okay,
So this type of messages are called memorandum. Now, what are the specific purpose of this memorandum? ये question आता है कि what are the specific purpose of memorandum? Explain या critically elucidate the what do you say, the purpose of memorandum. Okay, इस तरह का क्वेश्चन आता है. तो पहला क्या होगा? Describing problems. फर्स्ट जो मेमोरेंडम होता है, इट डिस्क्राइब्स अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एडिशनल रिसोर्सेस. रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एडिशनल रिसोर्सेस. द थर्ड वन, कंटेन प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. ठीक है. एक्सप्लेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स, कंटेन ऑफिस इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन. जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई भी ऑफिस में या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में या कोई भी कंपनीज में जो कि कोई नया पॉलिसीज बनता है या फिर नया इंस्ट्रक्शंस आता है, उस चीज को फॉलो करने के लिए मेमोरेंडम यूज किया जाता है. शॉर्ट मैसेज, इनवाइट द रीडर्स टू बिजनेस मीटिंग कॉन्फ्रेंस, गिव फीडबैक, सजेशंस और रिकमेंडेशंस, सीक एक्सप्लेनेशंस और क्लैरिफिकेशंस, और बी जस्ट पोलाइट रिमाइंडर्स. जैसे रिमाइंडर्स के तौर पे, जस्ट नाउ आई वाज लिटिल बिट लेट joining the class, so ma'am just gave a polite request through her instant message app, and she requested me, so please join the class, students are waiting. तो ये भी एक छोटा सा इंस्टेंट मैसेज जो होता है, ये भी मेमोरेंडम के अंदर में आता है. एक और कहा गया है सीक एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन. सपोज आई नीड अ क्लैरिफिकेशन वेदर यू आर अंडरस्टूड और नॉट. तो मैं क्या करता हूं, मैं जैसे ही फट से एक मैसेज, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है वीडियो, मतलब जो आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, इसमें ऑप्शन होता है, मैं वहां पर मैसेज आपको टाइप करके बता सकता हूँ कि प्लीज वेदर यू आर, डू यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कंसल्ट, ओके, प्लीज आस्क क्वेश्चंस. तो ये जो इंस्टेंट मैसेजेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, these all comes under, or these all falls under memorandum. Okay. Now, in contrast, upward memos are sent by the subordinate to their superiors. There are basically two type of memos are there. ठीक है. शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है ये, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरेंडम्स आर देयर और हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोज आर देयर. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरेंडम आर देयर. नंबर वन इज डाउनलोड मेमोज and number two is upward memos. These are the two important structure of the memos, or you can say these are the important what you can these are the important categories of the memos. Okay, जो downward memos होता है, they are used to communicate to the subordinates in their hierarchy of the organizations. Okay, जो डाउनवर्ड मेमोज होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट किसे कहते हैं, आपसे जो छोटा, सपोज आप एचआर रैंक में नौकरी करते हो, सो आपकी जो नीचे वर्कर्स है उसको सबॉर्डिनेट्स कहा जाता है. तो उस वो मैसेज सबॉर्डिनेट को सर्कुलेट करने के लिए जो इंस्टेंट मैसेज यूज किया जाता है, दैट टाइप ऑफ मैसेज इज कॉल्ड डाउनवर्ड मेमोज. Okay, now what is the purpose of using downward memos? The purpose of using downward memos are, number one, to convey routine information such as new product, service being introduced, new policy changes, new introduction, new procedures, new marketing strategies. सब कुछ देखो यहाँ पर न्यू न्यू वर्ड यूज हो रहा है. तो जो भी कोई इम्प्लीमेंटेशंस नया होता है, कंपनीज में आता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, वर्कर्स को, लेबर्स को, तो वो डाउनवर्ड मेमोज होता है. ठीक है. एम आई क्लियर? मैं ऑडिबल हूं? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर. ठीक है, चलो. Yes, sir. Okay. The next one is upward memos. What is upward memos? Upward memos are sent by the subordinates to their superiors. Okay. Upward memos जो होता है, sent by the subordinates to their superiors. For an example, suppose Sarita is general manager of any company. Now, I am the executive of this particular company. Now, I want a leave. I want a 1 day leave, instant 1 day leave, or half an hour, half a day. I want an instant half day leave. So what will I do? I just simply mention 2 or 3 lines. Not a letter. You cannot say it as a letter.
I just simply type 1 or 2 lines in the memo, sir. It's earnest request to you that I need a half day leave on a prior basis, as because some unavoidable reasons are there. ओके मैंने ये सिंपल सा मैसेज टाइप करके अपने जो सीनियर्स है उनको भेज दिया। तो ये जो अपवर्ड मैसेज का कनेक्शन हुआ, इस मैसेज को कहते हैं अपवर्ड मेमोज, जो कि एक सबऑर्डिनेट और एक हायरकी इन दोनों के बीच में ही होते हैं। जैसे कम्युनिकेशंस में मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आप लोग भूल गए हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशंस, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशंस। Okay, same with this also. There is a two type of memorandums is there. Number one is downward memos, जो कि सुपीरियर अपने जूनियर्स को लिखते हैं, और एक अपवर्ड मेमोरेंडम जो कि एक जूनियर्स सुपीरियर को लिखते हैं। These are the two different type of memos are there. Am I clear? Yes, sir. Now, there is an important questions, or there is an important, what you can say? Yes, you can say it is an important questions. How to write effective business memos? Look at the words. Yesterday, we are continuing with a resume. There is also the writer using the word effective. So every time, if I turn the pages and all, I find this word is very much prominent and always been mentioned in every sections of the writing skill. Why the word effective been used? Effective is usually being used as because so that whenever you use this methodology, whatever the methods are being given in this book, if you utilize it in a writing process while writing or drafting any memos or letters or resume, then your letter, resume, or memos will be very much effective. Effective in the sense you will going to get a very quick and prompt response. मैंने कल एक चीज आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था, भूल गया था मैंने, क्लासेस ओवर हो गया था, मुझे वहां से बार बार आई वाज जस्ट I was receiving some messages and all because you have another class with somebody else, some other faculties. That's why I was getting the time that sir need to the class be over as because they have some other classes and all. That's why. तो मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस नहीं किया है। जानते हो आप लोग, आपका जो सिलेक्शंस होता है, प्रिलिमिनरी सिलेक्शंस होता है, वो आपको रेज्यूमे के ऊपर ही बेस करके आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होता है। ये चीज आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, वो इंट्रोडक्शन आपके रेज्यूमे बेसिस पे ही होता है। ओके, द फर्स्ट इंट्रोडक्शंस ऑफ एनी कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर रेज्यूमे पर्टिकुलरली। So that's why to create an effective impact in the minds of an HR, you need to create a very effective resume. Okay, you need to create a very effective resume. That's why I'm telling you, more or less, whatever yesterday I have told you now, these all are the practical experiences I have gone through during this tenure. And with my practical experience that yesterday I have discussed this class. Okay, if you implement this in your preparing your resume, then I am 200% sure that for whichever company, for whichever post you are going to apply, definitely you will going to get your response first. Okay, now it's up to you how you deal with the HR on the question round. Okay, that is some separate. But the first call, for the first time, for the first selection is based on your resume only. The more effective your resume will be, the more effective and the more chances you're going to have get a call from the your respective HR or from any companies. Okay, that is why I'm telling you, even I'm telling my students also, that always prepare a resume with some effective, some extra things, some extra spark you need to add in your resume, so that it's always been noticed by an HR. क्योंकि आपके साथ सिर्फ अकेले आप ही अपना रिज्यूमे नहीं डाल रहे हो, आपके अलावा हजारों और भी है आपके इंतजार पे, मतलब और भी है आपके पीछे जो रिज्यूमे डाल रहे हैं, ये रिज्यूमे दे रहे हैं। ठीक है, और मैंने ये चीज सामने बैठ के फॉलो किया है, जितने भी एचआर आते हैं फ्रॉम डिफरेंट
ईस्टर्न रीजन से, वेस्टर्न रीजन से, अदर रीजन्स, अदर कंट्रीज से, अदर पार्ट ऑफ स्टेट से जब आते हैं वो यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो मैंने ये चीज देखता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो सबसे ज्यादा आपके क्वालिफिकेशंस पे, सबसे ज्यादा आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो उसमें, आपका जॉब रोल पे, आप किस तरह का जॉब आप मतलब किए हो, आपका जॉब पोजीशंस क्या था, आप कैसे अपना जॉब पोजीशंस को किस तरह से आप यूटिलाइज किए हो, दे ओनली फोकस्ड ऑन दैट। और ये सब चीज अगर रिज्यूमे में मिसिंग रहेगा ना, दे हार्डली टेक एनी टाइम्स टू रीड दोज मैसेजेस, रीड दोज रेज्यूमेस एंड ऑल। सिंपली वो एक झलक देखते हैं और वो ड्रॉप कर देते हैं। तो हमारे पास, मैं ये स्टूडेंट्स को अक्सर बताता हूँ, किसी को कोई भी एचआर को इंप्रेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टाइम रहता है। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप अगर अपने इंप्रेस कर सकते हो अपना जो एचआर है, तो देन यू विल बी, आपको और फिर आप पहला स्टेप आप ले लिए तो दूसरा स्टेप आप सक्सेस हो ही जाओगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप अगर आप लड़खड़ा गए, ओके, तो फिर आप दूसरे स्टेप उठने से पहले आप गिर जाओगे। दैट इज वाई preparing a resume is very, very important. Am I clear? Yes, sir. Always try, always try, always try to add something. Okay, always try to present something in some others way. आप इस तरह से अपना रिज्यूमे को प्रिपेयर कीजिए ताकि वो आकर्षित हो। अब आकर्षित का मतलब ये नहीं कि आप उसको कलरिंग कर दे, लाइट्स, बहुत जन होता है रेज्यूमे कलरिंग करके, मतलब दे यूज टू गिव अ बैकग्राउंड कलर्स एंड ऑल, नो, इट्स ऑल कंप्लीटली बुलशिट यार, वो सब गलत है। वो फिर आप समझ जाओ, वो फिर लेते ही नहीं है। आपको अगर आपको अगर अपना रिज्यूमे में थोड़ा सा भी मतलब स्पार्क लाना है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर एचआर को आपके रिज्यूमे को देख के लगेगा, तो आप उस तरह का मटेरियल्स आप उसमें डालिए। मटेरियल्स डालने का मतलब ये नहीं कि आप कलर कर रिज्यूमे को बैकग्राउंड कलर दीजिए, थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर दीजिए, वो उतना इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये दो तीन जगह ही देखते हैं। अगर वो दो तीन जगह उसके मन मुताबिक मिल गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। गॉट सिलेक्टेड, 200% चांस। तो क्या पोजीशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर क्वालिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन वेरी डिटेल्स विद अ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। वो परसेंटेज अगर नहीं मेंशन करेगा तो वो आपसे पूछेंगे हाउ मच परसेंटेज यू हैव सिक्योर्ड डूइंग दिस ऑनर्स एंड ऑल, or while you have completed your undergraduate or postgraduate, whatever, they will going to ask. अगर कंप्यूटर में आप वहां लिख रहे हो, आई एम कंप्यूटर लिटरेट, तो ऑन व्हाट कंप्यूटर लिटरेट, मतलब यू हैव यू कंप्लीटेड योर डिप्लोमा, हैव यू कंप्लीटेड योर मास्टर्स एंड ऑल, व्हाटएवर यू हैव डन, यू नीड टू मेंशन दोस थिंग्स। क्या क्या प्रोग्रामिंग्स आपने किया है, अगर पाइथन किए हैं, जावा किए हैं, सी प्लस प्लस किए हैं, सी किए हैं, तो कौन सा वर्जन्स में किए हुए? लॉट ऑफ न्यू वर्जन्स आते हैं पाइथन एंड ऑल, ओके, तो क्या वर्जन में किए हो? Okay, these are the things you need to implement, or you need to you need to mark in your resume, then only highlight in your resume, then only your resume will be very much, you can say, a close to the HR। वो फिर क्या करते हैं, उस रिज्यूमे को लेते हैं और एकदम अलग से रख देते हैं। और जब कैंडिडेट्स का पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसको तो मिल गया है, सपोज वैकेंसीज 4 जन का है, 40 जन ने अप्लाई किया है, उसको पहले से ही साइड करके रख देंगे। अब 40 को तो इंटरव्यू लेना पड़ेगा ना, बिकॉज दे हैव केम हियर। ओके, कॉलेज को भी तो देखना है कि ये 40 जन का इंटरव्यू लिया है, लेकिन सिलेक्शन तो 2 ही जन का होगा। तो उसमें क्या करते हैं, तुरंत वो एज जो भी रिज्यूमे आपका अच्छा है वो साइड करके रख देते हैं। नेक्स्ट राउंड में फिर आपका जो इंट्रोडक्शन राउंड है उसमें आपको बुलाया जाता है, जहां पर यू नीड टू गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शंस, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद 40 within a 40, 20 not even 25, within you can say within 1.5 minute you need to give your full introductions. Okay, these are the things, basic, you can say these are the basic things you need to understand to get impressions in the mind of an HR. Okay, so now what are the characteristics
राइटिंग इफेक्टिव बिजनेस मेमोस, जैसे मैंने वहां पर बताया इफेक्टिव, यहां पर भी देखो वर्ड यूज कर रहा है। इफेक्टिव बिजनेस मेमोस लिखने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी। The clarity is very much important. Clarity is the first characteristics of memo. What is it means? The memo must be very clear, written, because an unclear and vague message memos will confuse the reader, leading to delay the interactions. Okay, so whatever the message, clarity का मतलब होता है, जैसे मैंने आप लोगों को 7 C's ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मैंने पढ़ाया था, जिसमें क्लैरिटी, कंसाइज, कंप्लीटनेस, ये सब मैंने जैसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में बताया था, सेम चीज वही पर भी, ये सब यहाँ पर भी लागू होता है। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो मेमोस में, वो टू द पॉइंट होना चाहिए, एकदम एब्सोल्यूट टू द पॉइंट होना चाहिए, विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर, विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर। दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी। नाउ there is going to be a D programs and relevant topics related to the value education। ठीक है, ये नहीं है। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, क्लैरिटी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस किस टॉपिक्स पे हमें क्लैरिटी होना चाहिए। द फर्स्ट इज व्हाट इज द एग्जैक्ट टॉपिक ऑफ द प्रोग्राम, टॉपिक ऑफ द प्रोग्राम, एग्जैक्ट टॉपिक आप क्या लिखना चाहते हो मेमोरेंडम में, वो मेंशन करना होता है, एग्जैक्ट। उसके बाद व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट ऑफ द प्रोग्राम, आप जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, या जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, या कोई भी मीटिंग्स आप शेड्यूल करना चाहते हो, उसका एक एग्जैक्ट डेट होना चाहिए। तो एग्जैक्ट टॉपिक, एग्जैक्ट डेट। उसके बाद हु आर द पार्टिसिपेंट्स, आप किसको किसको पार्टिसिपेंट्स करना चाहते हो, लेना चाहते हो अपनी कंपनीज में, आप उसका भी मैसेज आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डज द रीडर नीड, ये तो अलग क्वेश्चन है, आप किसके किसके सपोर्ट चाहते हो उसका भी आप नाम मेंशन कीजिए। तो बेसिकली दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which you need to mention while drafting memorandum। Okay, now in order to maintain clarity in memos the following point must be remembered। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताया गया है, आप अगर क्लैरिटी मेंटेन करना चाहते हैं मेमोरेंडम में, मेमोस में, कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है जो आपको ध्यान से समझ के करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। पहले क्लियर रेफरेंसेस शुड बी यूज, सबसे पहली बात रेफरेंस जिसका भी आप डाल रहे हो वो वेरी क्लियर टू द पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंपल, familiar and specific words and expressions should be used, very simple, don't use very what you can say very high level language English. Okay, no needed to use some what you can say big words which you hardly somebody else can clarify the meaning of that particular words. Don't mention all those things. Okay, try to be very specific, try to be very normal, use very simple English but correct English। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या है, टेंसेस का क्या कंडीशन है, सब्जेक्ट क्या है, नाउन प्रोनाउन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शंस क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है, क्या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, ये जो ग्रामेटिकल पार्ट है ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप गलत लिखोगे तो डेफिनेटली ये वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है in the minds of the reader। Okay, the next one is cliches and overused of proverb and phrases should be avoided। cliches and overused of proverbs, proverbs आपको यूज नहीं करना है, phrases आपको यूज नहीं करना है, टू द स्पेसिफिक टू द पॉइंट आपको सिंपल इंग्लिश में ही मेमोरेंडम को लिखना है। शॉर्ट सेंटेंस, सेंटेंस ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। पैराग्राफ शुड बी यूज्ड, स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स यूज्ड होना चाहिए। आइडियाज शुड बी सेपरेटेड इनटू पैराग्राफ्स, जो भी आइडियाज आप शेयर करना चाहते हो पैराग्राफ्स में उसको शेयर कीजिए, शेयर इट इनटू द पैराग्राफ। These are the few important points, or you can say these are the few important keynotes you need to remember while drafting or writing the memos। उसके बाद होता है क्लैरिटी के बाद आ जाता है कंसाइजनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंसाइजनेस? कंसाइजनेस का मतलब होता है डायरेक्ट एंड इफेक्टिव एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी मेंशन। दिस इज कॉल्ड क्लियर कंसाइजनेस। एसेंशियल इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, effective information, these are the 3 I's
of memorandum: effective, essential, and direct. These are the three important effective conciseness while drafting a memorandum. उसके बाद आता है informal tone. Tone must be a very polite, request mode. Don't use any harsh, rough, colloquial words writing or drafting any memos. Very normal, very polite, okay, way. With courtesy, you need to write memorandum. Now, the next one is parts of memos. Memos का कितना part होता है देखो. Memos का basically there are 4 parts. Memorandum has 4 important parts. Number 1 is heading, number 2 is opening, number 3 is body, and number 4 is closing. These are the 4 important parts of memos: heading, opening, body, and closing. ये 4 important parts हैं मेमोस के. ठीक है. हेडिंग में क्या होना चाहिए? सबसे पहले हेडिंग में होना चाहिए डेट. ओके. उसके बाद नेक्स्ट में आना चाहिए क्या? उसके बाद नेक्स्ट में आना चाहिए एड नेम टू, जैसे अविनाश गौतम सेल्स मैनेजर, फ्रॉम SR मल्होत्रा डायरेक्टर सेल्स, सब्जेक्ट sales target of the year 2013-24, 2013-14. ये हो गया हेडिंग का सैंपल. दिस इज द सैंपल ऑफ अ हेडिंग. तो सबसे पहले डेट, उसके बाद आप किसको मेमोज लिख रहे हो उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, कौन भेज, सपोज आप भेज रहे हो तो आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए उसका छोटा सा एक सब्जेक्ट. ये दिस इज द कंटेन ऑफ हेडिंग पार्ट. उसके बाद देन नेक्स्ट है आपका, द नेक्स्ट वन इज बॉडी. द नेक्स्ट वन इज बॉडी. व्हाट यू नीड टू मेंशन इज, आप जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो वो आपका बॉडी पार्ट में होना चाहिए, बॉडी ऑफ द मेमोरेंडम में होना चाहिए. इट्स क्वाइट सिंपल एंड वेरी मच फेमिलियर टू business letter. Okay, it's quite simple and very familiar to business letter, but the difference is that in business letter you need to mention at the top your address, sender's address, then comes to the receiving's address, then comes to the salutation, then comes to the subject, then comes to the greetings part, then comes to the body of the letter, conclusion, opening of the letter, then body of the letter, closing part of the letter, then comes to the concluding part of the letter, then signature. यहां पर सेम है, एवरीथिंग इज सिमिलर, बट सेंडर्स और रिसीवर एड्रेस नहीं होना चाहिए. क्यों? बिकॉज इट इज बीन सर्कुलेटेड इनसाइड द कंपनी ऑफ और इनसाइड द ऑफिस. दैट्स व्हाई इट डजंट रिक्वायर एनी सेंडर्स और रिसीविंग एड्रेस. सिर्फ और सिर्फ इतना मेंशन होना चाहिए, डेट, आप जिसको भेज रहे हो उसका नाम और डेजिग्नेशन, कौन भेज रहा है उसका नाम और डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ क्लोजिंग. एम आई क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट है तो पूछ लो. अगर कोई डाउट है, एनी क्वेश्चंस दैट कमिंग्स टू योर माइंड, मधुस्मिता, सरिता एंड ऑल, यू कैन आस्क मी. कोई डाउट नहीं है? Yes, sir, there is a doubt. So this part is not clear. Which part is not clear? Yes, Madhusmita, which part is not clear? Tell me. So actually, I want you to repeat the Madhusmita, your voice is breaking, Madhusmita. Please, you write the message if you have the, what you can say, facility in your mobile. You can write down the message as you have teach me how to write a message. Even I also don't know how to write a message in taking an online classes. You have shown me. You just write down the messages what you want to know.
Hello. I want you to repeat how to write business memo. My goodness. Okay. You want me to repeat how to write a business report. Okay. Very good. Madhusmita Panda. In gist. In gist. Okay. In a means in a small way. Okay. If you want to write a memorandum, okay, basically you need to always keep in your mind that there are the four important structure of writing a memo. Am I audible? First of all, make me clarify, Madhusmita, whether I am audible to you or not. Make it clarify. Is it? Am I audible? Yes, sir. Okay. Just listen to me. Listen to me. First of all, there are this. If you are wanting to write a standard memo, if you want to write a very standard memo. Now, why I use the word standard memo? Standard in the sense when you are writing a memo to your hierarchy, to your hierarchy, to your higher authorities. That's why to writing a memos to your higher authority, you need to maintain the standard. Okay, now you want to write a memorandum to the lower hierarchy, to the lower categories of working class labels. So I don't think, or not don't think, I don't think that you need to mention or you need to follow all those criteria which require in the memorandums. अगर आप अपने से जूनियर्स को कुछ मेमोस आप करना चाहते हो तो आप उस मुझे नहीं लगता है कि उतना आप उस चीज को फॉलो करोगे लेकिन वहां वही जब आप अपने सीनियर अथॉरिटीज को आप मेमोरेंडम या फिर कुछ मेमोस देना चाहते हो तो आप फिर वो क्राइटेरिया जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो होता है वो डेफिनेटली मेंशन करोगे तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम में फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर देयर Number one is heading, number two is opening, number three is body and number four is closing. ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक मेमोरेंडम का. सबसे पहले क्या होता है हेडिंग. हेडिंग में आप क्या लिखोगे सबसे पहले हेडिंग एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज यू नीड टू मेंशन डेट. एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर पेज यू नीड टू मेंशन डेट. आपको डेट मेंशन करना होगा. उसके बाद दो उंगली छोड़ के नीचे आ जाओ एक उंगली छोड़ के नीचे आ जाओ वहां पर लिखना है टू. टू के बाद टू whom you are addressing, to whom you want to send your memo you need to mention his name. For an example Mr. Avinash Gautam. मैं एक एग्जांपल जैसे ले रहा हूं टू मिस्टर अविनाश गौतम. उसके बाद क्या लिखना है राइट डाउन हिज डेजिग्नेशन. फॉर एन एग्जांपल सेल्स मैनेजर. मधुस्मिता यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? ओके नाउ यहां तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट आता है फ्रॉम द पर्सन. सपोज यू आर सेंडिंग ए मेमो तो यू नीड टू मेंशन योर ओन नेम ऑल्सो. फ्रॉम मधुस्मिता. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर. आपका डेजिग्नेशन क्या है? HR एग्जीक्यूटिव. लिख दीजिए HR एग्जीक्यूटिव. उसके बाद कम अगेन लीव 2 लाइन स्पेस. Write down the subject. What is the purpose of writing this memorandum? For an example, sales target for the year 2013-14 या 2022-23 या फिर 2023-24. ये हो गया सब्जेक्ट. उसके बाद कम डाउन टू द बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द मेमोरेंडम. उसके बाद आपको बॉडी ऑफ द मेमोरेंडम में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. दिस इज टू हियरबाय टू इन्फॉर्म यू दैट टुडे एट 11 a.m. morning we have a meeting with the delegates team. So mention the names who will be there in the team. वो आप mention कर दीजिए. Okay. आप क्या चीज में डिस्कस करने वाले हो? We will going to discuss on a sales target for this year. We will going to fix the sale target in this year 2024 and we also discuss that how much we have achieved during this 2023 and what we need to more achieve in the coming year, in the next year, and what will be the target and what will be the goal, each and everything आप उसको बॉडी ऑफ द मेमोरेंडम में आपको मेंशन करना है. खत्म हो गया. उसके बाद लास्ट में आ जाता है क्लोजिंग. अब क्लोजिंग में क्या करना है? क्लोजिंग में यू जस्ट नीड टू मेंशन signature. That's all. You just need to mention your
signature, complete. This is the structure of writing a memorandum. देखो समझ में आया? If it is clear to you, okay. Yes, sir. If not, then definitely I am going to repeat it again. Madhusmita, Sarita, Prerna, हाँ? Clear? Okay, चलो. Hmm. Whatever the notes it has been shared with you, okay, please you need to go through those notes. Okay, you need to go those notes, go through it. Definitely there are a lot of in this memos, resume writing skill are there, I think. Okay, if not there, then please request ma'am. Okay, that's ma'am, please provide us the note. She will going to inform me, sir, you need to provide those notes and all. It has not been there. Definitely I'm going to send it again. Okay, so don't worry about that. Please prepare. Definitely you're going to get these type of questions in your examinations. Okay, it's very very important how to write a memos, how to write a business letter, how to create a CV, and what is the difference between resume and CV. These all going to come in your examinations. Electronic mailing. Through an electronic mail, what we need to be, we send some instant messages, very what you can say, very urgent messages to any authorities, and with a fraction of seconds, with a few minutes, we receive the same message. So this process is called email or electronic mail. Okay, and now in today's generation, business, what you can, if you want to set a business, you need to have an email. Okay, and because it's more specific, it's more rapid growth, and it's more friendly. Okay, eco-friendly. That's why email writing has been used. Now what is the advantage of email writing? If I say you what is the advantage of email writing, then it's a very speed, low cost, quick distribution. It has a flexibility and easy attachments. That's why we use email writing. So these are the some advantages of using email writing. Very speedy. You can send an instant messages to anyone else on his IP address in a very quick or a fraction of seconds. That's why it is very speed, low cost. It doesn't require any postcard. It doesn't require any what you can say, any tickets and all. Okay, it's a very low cost. It's a very quick distribution. Suppose you want to send your messages to 100, you just mention those email ID of 100 what you can say candidates in a CC, and the message will be distributed in a very easy and fast way. Then comes to the flexibility. Flexibility means there is a flexibility in receiving and outgoing the messages. So these are the few important types, or you can say important advantages of email writing. Okay, and again, the same questions been writing here. Again, the same questions been arise. How to write an effective email? Okay, what are the characteristics of writing an effective email? So, writing an effective email, you must be clear, you must be concise, you must be correct,
and there is an what you can say, the message should be clear and there should be a conversational tone. Conversational tone means, what is the meaning of this conversational tone? Too much emotional, don't be too much emotional, or don't be too much informal while writing an email. Okay, writing an email, don't be too much informal. Informal का मतलब क्या होता है? Respected sir, with due respect I beg to state you that on census on date the pendings of this account it's not been cleared yet right now it's my earnest request to you. इतना सारा जो हम informal यूज कर रहे हैं, इतना सारा जो ऑब्लिगेशंस और फॉर्मल हम यूज कर रहे हैं, इतना फॉर्मेलिटीज ईमेल में होता नहीं है. ओके तो ये कन्वर्सेशनल, इसे कहते हैं कन्वर्सेशनल टोन. डोंट बी टू मच कन्वर्सेशनल while writing an email. Now what is the structure of email writing? The same structure of email writing is heading, salutation, body, closing and signature. These are the important, you can say 5 important structure of writing an email. Number 1 is heading, number 2 is salutation, number 3 is body, number 4 is closing and the last one is signature. ये 4-5 important components होता है एक ईमेल राइटिंग का. हेडिंग में क्या होना चाहिए? हेडिंग में होना चाहिए डेट, दूसरा होना चाहिए फ्रॉम, सपोज यू आर सेंडिंग एन ईमेल, उसके बाद टू जिसे आप भेज रहे हो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सीसी एंड बीसीसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी एंड बीसीसी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी एंड बीसीसी? कैन यू टेल मी? यू नो एनीवन? आप लोग तो बहुत सारे ईमेल्स करते होंगे एज यू आर ऑल आर वर्किंग. What is that? What is the full form of CCC, CC and BCC? Don't do Google. Google देख के मत करो. Don't know, sir. Anyone? My goodness. सरिता, नो सर. क्या बात कर रहे हो सरिता? इतने बड़े कंपनीज में यू आर वर्किंग, यू डोंट नो व्हाट इज सीसी एंड बीसीसी? ईमेल करती हो कि नहीं? सर अभी तक ऐसा कुछ ईमेल्स नहीं किए हैं, यदि किए होते तो जरूर बता सकते थे. कोई बात नहीं, जानना कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. लेकिन ईमेल वगैरह तो लिखने तो जानती हो ना? लिखना कैसे है, ईमेल कैसे करना है, ईमेल कैसे भेजना चाहिए, ये सब जानती हो ना? ना ये भी डिटेल्स बताना पड़ेगा? पहले बताओ. हेलो, चलो ठीक है. यस. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी. द फुल फॉर्म ऑफ सीसी इज कार्बन कॉपी, बीसीसी इज ब्लैंक कार्बन कॉपी. Okay, the CC stands for carbon copy and BCC stands for blank carbon copy. Now what is the difference between CC and BCC? Suppose you want to send a mail to 10 students. Suppose I as a faculty I want to send some important information through an email to 10 of my students, including Sarita, Madhusmita, Prerna and all. Now I want that the persons to whom I want to send the email, that particular person shouldn't know to whom I have sent email to others. In that case, to that specific candidate, I will put his email ID in BCC, blank carbon. इससे क्या होगा? वो मैसेज तो मिल जाएगा लेकिन वो कभी जान नहीं पाएगा मैंने उसके अलावा किसको और ईमेल किया है. इसे कहते हैं बीसीसी. सीसी उसे रखा जाता है आपको अगर लगता है कि ये जो मेल है ये सब मतलब मेल नहीं, ईमेल आईडी है, जो भी ईमेल आईडी आप भेज रहे हो वो सबको दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, तब आप सीसी में रखिए. अगर आपको लगता है कि इस बंदे को कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको आप नहीं चाहते हो कि जो भी आईपी एड्रेस और ईमेल आईडी मैंने सेंड किया है, किसको जिसको भी मैंने सेंड किया वो ये बंदा ना देखे, तो आप उस ईमेल आईडी को बीसीसी में रख दीजिए.
वो कभी देख नहीं पाएगा। वो कंटेंट मिल जाएगा, मेल जो है इंपॉर्टेंट, जो कंटेंट बॉडी ऑफ द मेल है वो मिल जाएगा, लेकिन आपने किस उसके अलावा किसको किसको और भेजा है वो कभी नहीं देख पाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बीसीसी। देखिएगा, जब भी कोई हायर ऑथोरिटीज जो होते हैं ना, हायर ऑथोरिटीज आपको जब मेल करते होंगे तो वो बीसीसी में रख के आपको मेल करते होंगे, ताकि ये पता ना चले कंपनी ने आपके अलावा और किसको किसको मेल किया है। तो ये चीज जो है हाइड करने के लिए समटाइम्स व्हाट द कंपनी इज यूज्ड टू डू, द कंपनी यूज्ड टू keep your mail in BC, your mail ID in BCC, and just send you the messages so that you couldn't see to whom apart from you the company has sent others in the same email. So this is the basic difference between CCC and BCC, carbon copy and blank carbon copy. अब बोलो कोई डाउट है तो पूछ लो। Anyone, any one of you, do you have any doubt? Madhusmita, Sarita and all? नो सर। No, sir. ठीक है, तो ये हो गया बीसीसी। उसके बाद आ जाता है डेट। उस डेट, डेट तो आपको डेफिनेटली मेंशन करना ही होता है। उसके बाद आ जाता है आपका फ्रॉम। फ्रॉम में आप जिसको आप भेज रहे हो मेल आईडी, अपना मेल आईडी वहां पर डालना है। टू whom you are sending, you need to mention his mail id। सीसी और बीसीसी मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, यू नीड टू मेंशन द सब्जेक्ट। थोड़ा सा लेटर फॉर्म में ही है, लेकिन लेटर में बहुत सारा फॉर्मेट होता है, बहुत सारा लेआउट्स होते हैं। यहां पर उतना लेआउट नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 लेआउट्स ही है। देयर इज ओनली 5 लेआउट्स इन राइटिंग ए email, but in business letter there are 8 or 9 or 10 types of layouts are there writing a business letter। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेट, फ्रॉम, टू, सीसी, subject, CCC, BCC, body of the email ID, signature, that's all, completed। And if you want to make any attachment, you can make an attachment। This is the you can say the email ID। This is you can say the writing strategies of effective email ID, email। And there is another important question that has been asked here: how to write a standard email practices? How to write a standard email practices? Be correct, इसका आंसर होगा यू नीड टू बी करेक्ट। देखो, हर जगह आप मेमोरेंडम लिखो, रिपोर्ट्स लिखो, बिजनेस लेटर लिखो, जब भी आप बिजनेस ओरिएंटेड कोई भी काम कर रहे हो ना, वो इफेक्टिव होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ये सारा जितने भी मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस लेटर हुआ, मेमोरेंडम हुआ, या ईमेल आईडी हुआ, दिस बेसिक थिंग्स आर वेरी कॉमन। एक चीज एकदम कॉमन है, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, एकदम क्लैरिटी, करेक्ट, कंसाइज, एकदम प्रिसाइज पॉइंट होना चाहिए, और विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये 6 चीज आपका ईमेल आईडी में सेम होगा, ईमेल राइटिंग में भी सेम होना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग में भी सेम होना चाहिए, मेमोरेंडम में भी सेम होना चाहिए, एंड लेटर राइटिंग में भी सेम होना चाहिए। This is the very, you can say, a very important pattern that you need to follow while drafting, writing, or whatever you need to do, email ID, letter, or memorandum। Any doubt? नो सर। Hello? Okay। Now there is the last topic that I want to discuss and close this session. After completing this, the session will be end. That is report writing. Another important topic I need to discuss, that is report writing। Okay, report writing क्या होता है? It's same as a memorandum, but report writing, there is some difference is there. That is, it is a formal
written documents, okay, for a specific audience. देखो यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा है स्पेसिफिक ऑडियंस, सबके लिए, for a specific audience to meet a specific need. Okay, a report is a formal document, a written document. It's used for the specific audience to meet a specific need. It may contain fact, situation, project, process, analysis, interpretation, data, events and records. एक रिपोर्ट राइटिंग में इतना सारा पॉइंट्स हो सकता है. क्या क्या होता है? प्रोजेक्ट, प्रोसेस, इंटरफेरेंस, कंक्लूजन्स, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस, ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये सारा जो है ये कम्स अंडर रिपोर्ट राइटिंग होता है. Now what is the importance of report writing? The importance of report writing is used for several purposes. What are the purposes? Presenting data, describing problem, suggesting solutions, discussing and analyzing data, raising and happenings, analyzing a situation or condition, giving feedback, suggestions or recommendations. This all been included in the importance of report writing. The next one is, how many types of report writing are there? Basically, there are, you can say, three types of report writing are there. एक होता है informational, दूसरा होता है routine, तीसरा होता है oral written reports. These are the three important written reports. You can say these are the three important reports are there. उसके बाद आता है written reports में उसको bifurcation किया गया है, मतलब सबडिवाइड किया गया है. एक होता है फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग, दूसरा होता है इनफॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यू कैन से ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, कंसिस्टिंग ऑफ अ लेटर फॉर्मेट ओनली. रिपोर्ट राइटिंग बहुत सारा फॉर्मेट होता है. एक लेटर फॉर्मेट में भी रिपोर्ट राइटिंग होता है, एक मेमोरेंडम फॉर्मेट में भी मेमो फॉर्मेट में भी रिपोर्ट राइटिंग होता है. ओके, कंफ्यूज मत हो जाइए, ये कभी भी कंफ्यूज मत हो जाइए. रिपोर्ट राइटिंग में भी मतलब लेटर फॉर्मेट में भी रिपोर्ट राइटिंग होता है, ठीक है. एक होता है आपका मेमो फॉर्मेट में भी रिपोर्ट राइटिंग होता है. लेटर फॉर्मेट में रिपोर्ट लेने के लिए इसका कुछ बेसिक्स रूल्स है. क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको मेंशन करना होता है डेट, एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर एंड उसके बाद कम टू द नेक्स्ट योर सिग्नेचर. देखो सेम इसे कहते हैं लेटर फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट. लेटर फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट. नेक्स्ट आ जाता है एक मेमो फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट. मेमो फॉर्मेट रिपोर्ट में भी सेम डेट, देखो डिफरेंस देख लो. डेट टू आप किसे लिख रहे हो, फ्रॉम आप लिख रहे हो आपका नाम, आपका डिजिग्नेशन, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द लेटर, सिग्नेचर. तो रिपोर्ट राइटिंग दोनों वे में आ सकता है एग्जामिनेशन में. एक लेटर फॉर्मेट में भी आ सकता है और एक मेमोरेंडम फॉर्मेट में भी आ सकता है. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, एम आई क्लियर मधुस्मिता एंड सरिता? डोंट गेट कंफ्यूज्ड. whatever you have practiced whatever you have practiced in your school days, it is only a one type of letter writing, report writing a report. Okay, but here while you are in you can say you are doing your post graduation courses, you are studying in post graduation, so there are a lot of differences are there while studying or while doing report writing in your school days and now. Okay, so whenever you are in school na, the school teachers never ever going to teach you these things. Okay, they simply make you to write a simple report. But when you increase your standards, when your standards will increase, then only you will come to know that there are lot of differences in school writing format and in post-graduating writing format. Post-graduating writing formats of memo writing, report writing basically comes under two format. One is letter format and another one is memo format. Letter format in the sense same thing is there, but the difference is that
you need to mention the name of a company at the top, in the middle, at the top, in the middle. While the same thing you need to follow in report in writing report format of a memo. The same thing you need to mention, but the thing is that you need to mention the date, to whom you are sending, from whom it has been sent, subject, body, close. That's all. Apart from this, there is no changes is there. Am I clear? Yes, sir. ओके आप लोग जो किए हो, आप सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो यहाँ पर टोटल 11 पार्ट्स होता है रिपोर्ट का। रिपोर्ट राइटिंग का टोटल 11 पार्ट्स है। एक होता है टाइटल, प्रेफरेंस, लेटर, एक्नॉलेजमेंट, टेबल, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इसीलिए राइटर ने यहां पर effective word यूज किया है। That is why the writer here mentioned the word effective. If you follow this 11 points for drafting any letter format of report, then believe me, the every report you are writing now, it will going to be counted, and it will be going to be take it very seriously. The person who is reading the report, they grant this report very seriously. Okay, if you mention these 11 points in your letter writing. Okay, तो सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले टाइटल, सबसे पहले स्कूल में जैसे किए हो सेम फॉर्मेट ही है, थोड़ा सा चेंजेस है। सबसे पहले टाइटल, सपोज फॉर एन एग्जांपल मैंने एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, ए रिपोर्ट ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी थ्रू परफॉर्मेंस एनालिसिस, या फिर ए रिपोर्ट ऑन यू कैन से गार्बेजेस दैट वर बीन डंप्ड बिसाइड द रोड। मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया हूं, मैंने एक टाइटल दिया हूं उस रिपोर्ट का। सपोज लिखना है क्या है टाइटल में, ए रिपोर्ट ऑन द गार्बेजेस दैट बीन डंप्ड beside the roads where the people used to pass. Okay, मैंने एक रिपोर्ट का टाइटल यहां पर ऐड किया। सबमिटेड टू, आप किसको आप सबमिट करने जा रहे हो, वहां का एड्रेस आप थोड़ा सा दे दीजिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह का, या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, इस तरह का टाइटल। उसके बाद सबमिटेड बाय, अपना नाम दे दीजिए, उसके बाद डेट दीजिए, उसके बाद आपको टेबल ऑफ द कंटेंट्स में लिखना है सबसे पहले प्रीफेस, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स, उसके बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शंस, और उसके बाद मेथोडोलॉजी। दीज आर द थिंग्स और दीज आर द कंटेंट्स you need to mention while drafting reports. I will going to send you the sample of writing reports. Don't worry about that. ओके क्योंकि ये ऑनलाइन का डिस्कशन हो रहा है, तो ऑनलाइन में तो मैं आपको डिस्प्ले करके बता नहीं सकता हूँ। जितना हो सका मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। डोंट वरी, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट दिस नोट्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स, जहां पर ये सारा कुछ सैंपल, हाउ टू राइट रिपोर्ट, हाउ टू राइट मेमो, हाउ टू राइट एन ईमेल, हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर, हाउ टू ड्राफ्ट एन रिज्यूमे एंड सीवी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। आप थोड़ा सा ध्यान से उस चीज को पढ़ लीजिएगा। दैट्स ऑल। So any doubt? No, sir. Madhusmita, No, Sarita, sir. any doubt? Okay. So then conclude this session. Let's come to the end of this sessions. अब कोई नहीं तो सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं, ठीक है? Okay, sir. Okay. चलो, thank you all of you.